राइट जी, आप देख रहे हैं एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। हमें आइल्स स्पेशल प्रोग्राम आइल्स विद यशाल और मेरे साथ जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सिलसिले में अक्सर हमारे साथ होती हैं। टुडे वी हैव गॉट अ न्यू स्टूडेंट, अ न्यू गेस्ट। ही इज साजिद हुसैन। साजिद हुसैन, वेलकम यू इन दिस स्टूडियो ऑन एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान। Thank you so much, sir, for just inviting me on your studio. Okay, I hope you'll be enjoying here. I will enjoy, sir. Inshallah. Okay, as you know, according to IELTS, in the previous session we covered the different FAQs, and in the very first session we covered what is IELTS actually, what are the modules, different modules, speaking, listening, reading and writing. And in today's radio program, if you are watching us on YouTube, you are watching us on FM World Pakistan, FM on FM page, or you are listening us, we welcome you, all of you, all the people who are stay with us, and you are like sending us different comments, you are asking us different questions. We are here just to inform you like what is IELTS, how to prepare, and what are different modules. If you have any question, you can comment on our video. If you are watching us on FM World Pakistan, you can comment there. And if you want to make us call, our contact number is 05184619113. We are live from FM World Pakistan Islamabad studio से। और in अक्सर I think we should discuss speaking module. We should start our like different modules: listening, reading, writing and speaking. We should start from the speaking today. Okay, sir. अगर आप हमें सुनना चाहते हैं, आपके पास सिंपली आप जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, देयर इज़ एन ऐप एफ वर्ल्ड पाकिस्तान। आप ऐप डाउनलोड करें। वेर एवर यू आर इन पाकिस्तान, यू आर इन इंडिया, यू आर इन अफ्रीका, you are in UK, Canada, Australia, wherever you are. We don't have any boundaries. You know, this is the age of global village, and world has become the global village. From UAE, you can listen to us, you can watch us, and from UK, from Saudi Arabia, wherever you are. So we don't have any boundaries. So if you're watching us, just comment your name, just comment your city, like where are you from, if you have any question, and you can comment your questions. And in today's program, we are going to particularly discussing the speaking part 1. In IELTS speaking, you know, there are the 3 parts: speaking part 1, Yes, speaking part 2, and speaking part 3. And the test duration is 11 to 14 minutes. Depends on the examiner कि वो आपसे 11 मिनट में like speaking part 1, 2 और 3 cover करेंगे, और they will be taken up to 14 minutes. Speaking part 1, you know, you have any know-how of like what is the time duration of speaking part 1, part 2 and part 3? ये कितना टाइम टेस्ट रहता है? यस सर, पहले बात तो ये कि सर जैसे कि 2 हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्रिटिश काउंसिल से भी आप आइल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैन आप AEO से भी आइल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दोनों ही आइल्ट्स के टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। और जो स्पीकिंग मॉड्यूल है, ये जैसे कि आपने बताया 11 to 14 मिनट्स पे जाता है। कभी कभार ये 11 मिनट्स पे भी ख़त्म हो जाता है, 10 मिनट्स पे भी ख़त्म हो जाता है। समटाइम्स इट टेक्स अप टू 14 मिनट्स। और ये भी सर 3 सेक्शंस में हमारे पास डिवाइड होता है। पहला जो सेक्शन है, डेट इज़ इंट्रो सेक्शन। एग्जामिनर आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपसे इंट्रोडक्शन लेता है, लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, और वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक टॉपिक देता है सर। उस टॉपिक के साथ आपको एक पेपर दिया जाता है, एक पेन दिया जाता है। आप उस टॉपिक के बारे में होमवर्क कर सकते हैं, लाइक आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द क्यू कार्ड सेशन। और टॉपिक किसी भी डिफरेंट चीज़ के बारे में हो सकता है, लाइक वो आपसे कह सकता है कि टॉक अबाउट बुर्ज खलीफा के बारे में आप बता सकते हैं कि वो बिल्डिंग कहाँ पर है, कितनी स्टोरीज़ हैं उसकी। आप पार्किंग लॉट के एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप डिफरेंट थिंग्स उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर जो थर्ड सेक्शन होता है हमारा, वो क्यू कार्ड को फॉलो कर रहा होता है। क्यू कार्ड के टॉपिक से ही थर्ड सेशन में सवाल किए जाते हैं उससे मुताल्लिक, और आपको सर फिर जनरली उनका आंसर करना पड़ता है। जनरल डिस्कशंस होती है अबाउट, इट लास्ट फॉर 4 to 5 minutes. स्पीकिंग पार्ट 1 जो है आपका, दैट इज 4 to 5 minutes. Then speaking part 2, they give you like a cue card, they pass a piece of paper and they pass a pencil to make some notes. You can jot down some points. And 1 minute आपको दिया जाता है. After 1 minute, for 2 minutes you have to speak. It's up to the examiner. वो आपको 1 minute में stop कर लें, वो आपको 1.5 minute पे, sometimes they give you up to 2 minutes. आपने उस topic के ऊपर बात करनी होती है, and they will be giving you questions. For example, the cue card topic is describe a place you would like to visit, and there can be some questions, bullet points होंगे जहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है कि where do you want to go, when do you want to go,
whom like with you want to go, और उसी जगह पे आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू आर गोइंग दैट प्लेस, वाई नॉट समवेयर एल्स. तो ये सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर कवर करनी होती हैं. यू हैव टू मेंटेन द फ्लुएंसी, यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी, योर टास्क अचीवमेंट, योर ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कनेक्टर यू हैव टू यूज़. और ये सारी चीज़ें आपके ना स्पीकिंग टेस्ट के अंदर चेक की जाती हैं कि हाउ गुड यू आर एट स्पीकिंग. इसी तरीके से फिर स्पीकिंग पार्ट 3 आ जाता है. दैट इज़ अगेन 4 to 5 minutes, और उसके अंदर यूजली 4 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू हैव टू प्रोलॉन्ग. जो स्पीकिंग पार्ट 1 होता है उसके अंदर आपने जो अपने आंसर्स देने होते हैं वो बड़े शॉर्ट से आंसर्स होते हैं, 2 to 3 sentences. एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सर जैसे कि आपने फ्लुएंसी की भी बात किया, आई वाज डिस्कसिंग इट अलोंग साजिद, ही इज माशाल्लाह फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, और ही इज जस्ट एन इंटर स्टूडेंट, बट जो इंग्लिश का लेवल साजिद का है वो हमारे यहाँ PhDs का भी नहीं होता. एग्जैक्टली. और अभी मैं साजिद से यही डिस्कस कर रही थी कि हाउ लाइक आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, तो ही सेड इट्स जस्ट नेचुरल. he'll be telling our audience and our listeners, ये जब बात करेंगे तो then फ्लुएंसी की जो सर बात कर रहे थे कि हम लोगों को फ्लुएंट रहना है इंग्लिश में, स्पीकिंग में वो हमारी जस्ट फ्लुएंसी चेक करते हैं कि हम कितना एक्यूरेट बोल रहे हैं और हम कितना फ्लुएंट बोल रहे हैं. हम पॉजेस तो नहीं ले रहे अपने बोलने में, हम हेजिटेट तो नहीं हो रहे अपने बोलने में. भी साजिद से वही चीज़ डिस्कस करी थी कि जब हम लोग स्पीकिंग में जाते हैं तो हम लोग किसी को कॉपी करने लग जाते हैं, किसी का स्टाइल कॉपी करने लग जाते हैं, किसी का एक्सेंट कॉपी करने लग जाते हैं. वो एक्सेंट अगर हम कॉपी ना करें और अगर हम वी जस्ट बी आवरसेल्फ तो वो ज़्यादा बेटर होता है. हम स्पीकिंग में उस मॉड्यूल में ज़्यादा अच्छा बैंड कैरी कर सकते हैं अगर हम सिर्फ खुद को रखें, किसी को कॉपी ना करें वहाँ पे. फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप वहाँ से रूल्स सीख सकते हैं, आप कुछ प्रैक्टिस सेशंस उनके साथ कर सकते हैं, बट एक्सेंट जो आपका नेचुरल है वही होना चाहिए. डोंट इमिटेट अदर पीपल, लाइक डेवलप योर ओन आइडेंटिटी. आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए. Okay, this was all about the like different parts of speaking, part 1, part 2 and part 3. As you told about the Sajid, he's got very good accent and he sounds like natural, like the native speakers. You cannot judge he from Pakistan or he's from UK or from America. Sajid, can you tell us, our listeners, can you tell us, our audience, the people who are watching us on YouTube, on Facebook, how you developed this? Sir, again I'm saying thank you so much for just inviting me in your program. And sir, it's simply the natural thing that I do. For example, whenever I speak in front of people, they say like, from where you are. So it's very complicated for me, very complex for me to just answer the people like I do belong to Gilgit actually. So they say like, no, you don't belong to Gilgit indeed. So you're from, I get very much baffled at why people do things like that about me. You might be from UK or from Australia. They always say like, Sajid, are you from UK, America or somewhere? So it's not like that actually. So it's a natural. You know, you can take benefit from people, like if they talk about you like you're from UK or you're from Canada. Actually, I'm not that much selfish. For example, taking benefits from. Then you're not a typical Pakistani. I'm a typical Pakistani. No, you're not a typical but Pakistani. you don't I'm a typical Pakistani and I'm a typical Gilgit. If you are not taking benefit from people. Okay. I'm a typical Gilgiti indeed. You can say like that. Okay. You will be watching Sajid Hussain over here on Facebook and on YouTube at FM World Pakistan Islamabad Studios से हम लाइव हैं. और अगर आप हमें हमारे साथ कोई कमेंट करना चाहते हैं, if you have any question about your IELTS speaking, you can ask questions about IELTS listening, reading, writing, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जहाँ भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, you can comment in the comment section and you can also like call us. Our contact number is 05184619113. यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं अपने जो भी इश्यूज हैं. We are here to address your issues actually. और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ कुछ लाइव भी हैं ऑन फेसबुक, द पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, वी वेलकम यू ऑल. आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अजीज़ हैं, एंड वी रियली appreciate your efforts. Like you people are preparing for IELTS, you know it's not an easy job. You have to like burn the candles at night. और आप जो है एफर्ट्स करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बट जो इश्यूज़ हैं छोटे छोटे आते हैं, हम उनको एड्रेस करते रहेंगे. और साजिद, हाउ डिड यू develop the accent? You know, like people because of your like physique, we cannot easily judge that you are from Pakistan or you are from UK, you are from Australia. How you develop the accent? You know, it's really difficult in Pakistan.
because our environment is not like the English speakers. Sometimes people are speaking like Shina, Barti in your area. People are speaking Pahari in Mari language, Potohari, Hindko. These are the different dialects like we people speak. Because of like this environment, you sound like native speakers. How you develop it? Sir, when I was down there at Gilgit, sir, if you look at the environment of Gilgit, it's not that much, for example, for study purposes, it's not that much good for the people. Yeah, you people are good at... the people who do belong education. to Gilgit, they're very much talented. They're Okay. extraordinary people. They're very much innovative in their work. Okay. Indeed. But they don't get the opportunity to just go somewhere. You have got the opportunity here. I have You got. have- Thank you so yeah. much for that, actually, sir. But sir, when I talk about the accent, when I was a child, so when I was studying in grade 4, I was studying. I was just trying to just study the newspapers. I was just trying to just read the newspapers. Okay. But I was not getting the things, but I was trying my level best. I was just striving my level best to just read them out. With the gradual time, I just started learning new things. I just do watch a lot of movies. I do just listen to different native speakers. Plus, I do watch different like video shows, video talks. So Like Britain Got I don't Talent copy or the American people Got actually, Talent. sir. I didn't copy the people actually. Okay. It's natural, but I tried that. How do they speak actually? So it's simply the natural thing that I do over here, sir. Anything specifically, like any specific newspaper or any specific native speaker you... If you talk about Gilgit, we don't get a newspaper. We get a newspaper after 1 month. For example, you read it right here, right now. But Yeah. we will get it after 1 to 2 months. Oh. So it's it was very complicated. It was very complex for the people of Gilgit Baltistan. Still, it's very complex to just avail their opportunities. But it's the passion about the thing. It's it's all about the ambition, or you can passion. say like it's the goal that just takes you. जैसा कि मैंने पहले बताया, the world has become the global village. You have access on YouTube, you have access on Facebook, और आप यहाँ बैठ के even these days there are the different apps you can communicate across the world, and different websites हैं, different apps हैं, like you just play over there और आपको वहाँ से ऑडियो भी मिलती है, आपको टेक्स्ट भी मिलता है, different podcast, और वहाँ से पॉडकास्ट से आप लोग सीख सकते हैं, different न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं. बट इट डिपेंड्स लाइक स्पार्क तो आपने खुद ही डेवलप करना होता है. यू हैव टू ignite he has yourself. that spark in Yeah, it. he has that spark. He has that spark. He is very good, mashallah. Yeah, mashallah. And you should pray for him. The people who are watching us, the people who are listening us. और आप And he देखेंगे कि has just done his matriculation. he is doing FSC. He's doing FSC. He's in the intermediate now. But how good he is at Mashallah. speaking, mashallah. Mashallah. Then his looks, mashallah. Thank you so much, sir. Okay. The people who are watching us on Facebook, like we welcome you all from FM World Pakistan Islamabad ke studios. Say if you're watching us on IELTS with Yashal, you are most welcome on Facebook page or on YouTube. IELTS with Yashal. If you're watching us on FM World Pakistan on our official Facebook page or on our YouTube, you are most welcome. हमारा जो प्रोग्राम होता है that is on Tuesday and on Thursday. Every Tuesday, every Thursday we are here from 12:30 Pakistani Standard Time to 1:30 to address your queries, to address your problems with respect to speaking, with respect to listening. You know, this program is particularly designed and prepared and is being launched on air for the sake of to help the people who are preparing for IELTS. They are in the remote area. They don't have access to pay to their academies. They don't have access to come in the cities. They want to prepare they're on their own. They don't have resources to move on. So you people can prepare. You people can call us. We can guide you what kind of books you should read, how you can prepare the speaking part, how you can prepare the listening part, how you can prepare the reading part or the writing part. Let's discuss the speaking part 1, like what sort of questions you will be given in your speaking part 1. तो speaking part 1 जो है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. हमारे साथ रहिएगा. Speaking part 1 जो है that is social questions.
the examiner, he or she will be asking you questions about your social life. It can be about your study, about your education, about your home, about your family, your basically sir introductory type of things. Yeah, interview. Actually, there's a sort of interview. जैसे questions हमने साजिद से 2-4 questions किए, like how you develop the accent, where are you from, tell us about your family, or tell us your background, tell us something about Gilgit-Baltistan, as he was mentioning. So such kind of questions you will be given there during your speaking part. For example, अब हम साथ ना थोड़े से वो questions भी कर लेते हैं, उसको touch करते हैं कि what sort of questions आपको ज़्यादातर पूछने को मिलते हैं और उनके answers हमें कैसे करने होते हैं. Sajid, if I ask you, what's your name? Sir, I'm called Sajid. Okay. Okay, and you can say like, this is Sajid. Okay. Okay, I'm Sajid. I'm Sajid. Okay. What's your complete name? This is Sajid Hussain. This is Sajid Hussain. Okay. I do belong to Gilgit. Okay, and in IELTS speaking part, like, you know, there are like every test has its own criteria, like how to answer and how to prepare, or this is our requirement, you have to do this, this is our requirement, you have to do this. In IELTS speaking, if you are examiner, if examiner is asking you like what's your name, so you have to say, well, my complete name is Sajid Hussain, well, I'm Sajid Hussain, well, my name is Sajid Hussain. You have to tell the complete name. Yes. Right? Then examiner will be asking you what should I call you. For example, my name is Azhar Yashal. Examiner asking what should I call you. People call me Yashal, so you can also call me Yashal. And people call you Sajid, so you can say you may call me Sajid. Yes. You can call me Sajid. That's like that. Yeah, it's like that. Like Yes. Again, if I ask you what's your name. Sir, this is Sajid Hussain. This is Sajid Hussain. Okay, very good. You have to like say the complete name. Aksa, what should I call you? You have to tell me your name and then what should I call you? This is Aksa Ijaz, and you can call me Aksa. Okay, not AQI, not Aki. No. That is your nickname or that is your YouTube name? No sir, I use Aki on my social media. On social media you are. I don't use my real name on social media. Okay. You use Aki on social media. Yes, sir. All right. Okay, then if I ask you, Aksa, like why are you preparing for IELTS? I'm preparing for IELTS because I have to apply immigration for Australia, and I have to appear in IELTS, that is General Training IELTS, and that is a necessity, or you can say that is a... That is the requirement of immigration process. Yes. Without IELTS, you cannot go for like immigration. I've been preparing for IELTS because it is the requirement of immigration process, immigration purposes. Okay, Sajid, why are you preparing for IELTS? Sir, actually, sir, I just want to go abroad. Okay, so I'm very much passionate about going abroad. How you will be going? Sir, I'm gonna apply for the IELTS. Okay, For and after example. IELTS, you will be going there for study. Yes, I will go for studies. Firstly, I will go for studies, then I will just apply for immigration. All right. Because my brothers, sir, they just want to see me abroad. Okay. My whole family. Where is over he? there. They are in? Yeah, they do live in Gilgit actually. They Okay. all are in Gilgit. Okay, they're in Gilgit. Yes. They want you to move on. Yeah, they want me to move on. Move in on. life. Okay. Because Inshallah. he has that spark. Yeah, he has. And very soon, like after a few years, you'll be calling us on Facebook. Sir, I've reached in Canada, I've reached in UK. Inshallah. Sir, Inshallah. Inshallah. उसके बाद ये होगा कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस करते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स. तो उसके बाद उनको पता चल जाता है कि आप एकेडमिक के लिए आए हैं या आप जनरल ट्रेनिंग के लिए आए हैं. बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स. तो ये 2-3 क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं. एग्जामिनर विल बी आस्किंग यू कैन आई सी योर ID. तो देन यू हैव टू शो योर ID ओवर देयर. इफ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन अगर आपने CNIC के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन किया है तो यू शुड कीप योर ओरिजिनल CNIC विद यू. और अगर आपने थ्रू पासपोर्ट आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट वाला भी अपना पासपोर्ट शो करना होता है. इफ़ दे आस्क यू कैन आई सी योर आइडेंटिफिकेशन, कैन आई सी योर ID, तो आपने अपना पासपोर्ट अपना ID उनके सामने शो करना है. यू कैन से here you go, here you are, like this is my passport, this is my CNIC, here you are, here you go, that's like better. Yes. So this is the way you आप उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं. देन फिर वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करते हैं. एक और क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन होता है, एंड दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. व्हाट यू डू
like what do you do, what is your source of income, what is your profession, what do you do, ये questions आता है. यहाँ से फिर clear हो जाता है कि you are a student or you are working somewhere. अगर आप student हैं तो you should mention your university. आप अपना बता सकते हैं इंस्टीट्यूट बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज बता सकते हैं. यू आर डूइंग एफएससी, यू आर डूइंग मैट्रिक और यू आर डूइंग बीएस, उसका सेमेस्टर बता सकते हैं. वेल, I am a BS English student. Currently, I'm studying at Namal, and this is my 3rd semester. And like this is all about. You have to, like, for example, you are preparing for, you are doing FSC. Well, I'm doing FSC. Well, I'm in a 2nd year studying at Steps College, I think. Yes, Steps College, yeah. And I'm in 2nd year student. This is my 1st semester, this is my 2nd semester, this is my 3rd semester. I'm in last semester. I'm doing my project. I'm doing my thesis. ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर आपने अपनी बतानी है. And you can tell like that, sir, I'm a student, I do study. For example, if they will ask you about your school or your college, you can say like I do study at Steps College or At Steps somewhere College, else. Rawalpindi, yeah. Okay, you can say Yeah. like that. Yeah. And you can just if you are just supposed to just make it very lengthy or exaggerating that Yeah, thing is not good. For example, you have to just say like I'm a student, I just study in grade 12 or grade That's it, 11. that's it, yeah. That's all. Yeah. And you can say like I do study at Steps College. Exactly. That is down there, probably. Yeah, this is. You know, in IELTS speaking part 1, आपके पास ना बड़ा limited सा time होता है. Only 15 to 20 seconds you have. Examiner will be asking you the question and you have to answer. और वो उसी शॉर्ट से टाइम के अंदर ना आप लोगों ने अपना आंसर देना होता है, टू द पॉइंट. हाँ, व्हेन यू आर इन स्पीकिंग पार्ट 3 देन यू कैन एग्जैजरेट योर आंसर. फिर आप अपने आंसर्स को जितना आप लंबा करना चाहें आप लेके जा सकते हैं. It is all about like time management. You have to manage time on different sections of that test. And simply, it's like English international English language testing system. It's testing system. So you need to be very. They test you. Yeah, your accurate. grammar, Your accuracy. Yes. your accuracy, your fluency, like you are giving the right answer. या आप जो है अपनी ग्रामर कैसे यूज़ करते हैं, वोकैब कैसे यूज़ करते हैं, pronunciation. Right. That is very important. If you want to get 8 band or 8+ band, then your pronunciation should be like Sajid. Yeah. Up to 7 band तो बड़े आराम से आप like pronunciation जो है अक्सर की है, मेरी है. Up to 7 band, even up to 7.5 band you can easily achieve. जो हमारा एक local dialect है उसका जो हमारा accent है, it's natural. और ये आपको पता है just because of your vocal cords. He is quite young and he has changed his vocals. Up to 18 years of age आपके vocals change हो सकते हैं. What's your age, Sajid? I am 19. 9, but he has already developed. Exactly. Yeah, he has That is developed, why and we have It's like crossed. I'm 20, sir. You can. You are 20 now. You are 20 now. I'm 20. हम तो उस एज से काफी आगे निकल आए हैं अक्सर, और मैं तो हमारा वो एक्सेंट डेवलप करना. ये ज्यादती होगी सर. Like No, we can work on. ये कार्ड देंगे, ये हमने कार्ड देना है. Okay, we can work on pronunciation. नहीं, जोक्स अपार्ट, लाइक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोकल कार्ड सर, जैसे कि आपने क्लास में ही बताया था कि 18 इयर्स तक चेंज कर सकते हैं. चेंज कर सकते हैं. 18 इयर्स के बाद वो चेंज नहीं हो सकते. वो फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे. तो फिर जो उसके बाद प्रोनाउंसिएशन या जो हमने वो कैप पे अपनी काम करना है वो प्रैक्टिस के थ्रू ही करना है. Exactly. No, indeed, sir. Vishal has a really good voice, indeed. Really cute voice. Whose? Your voice. Sir, your My voice. is really sweet. Thank you so much. फिर आपको पता है वॉइस के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है. And plus, like that too. Your voice is good too. थैंक यू. Okay. आपको अपने एक्सेंट पे काम करना होता है, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होता है. अगर हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे भी काम कर लेना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वी कैन ओवरकम. हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन. जैसे किसी ने अभी साजिद नहीं कहा, दिस इज नॉट अ बिग थिंग कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें. अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि मतलब ये न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे लेकिन इन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसको पढ़ा करते थे. उन्होंने उसको छोड़ा नहीं. फिर उन्होंने डिफरेंट मूवीज देखी, इंग्लिश मूवीज देखी, उससे अपना एक्सेंट डेवलप करने की कोशिश की. अब वही मैं इनसे बात कर रही थी कि अब सिबलिंग्स, ही इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. तो ही वाज सेइंग कि मतलब पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस तरह की अच्छी नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये खानदानी सिलसिला है इनका या इनको अपने पेरेंट्स से मिला है. इन्होंने खुद मेहनत की है, इन्होंने खुद प्रैक्टिस की है. और सबसे बढ़ के ही वाज बीइंग हिमसेल्फ. किसी को कॉपी नहीं किया इन्होंने. चीजें देखी हैं जिनसे प्रैक्टिस की है, लेकिन किसी चीज को कॉपी नहीं किया सर. Actually, sir, I do believe that, sir. Be yourself. Be yourself. Don't copy the people. Indeed, for example, if you will copy the people, you will get babbled at about things. So try to just discover yourself. The spark that you have, if you will discover that,
you will just fly. But you will not just, if you just try to copy the people, so it will just create a lot of problems for you in your life. So just be yourself, just and try to just discover yourself. You know, Almighty Allah has blessed you 2 to 3 very unique skills. आप कोई भी हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन है, 2-3 चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जिसमें आप ना बहुत यूनिक होते हैं. फॉर एग्जांपल सम पीपल आर गुड एट कैलीग्राफी, किसी के स्केचेस अच्छे हैं, किसी की वॉइस अच्छी है, कोई सिंगिंग अच्छी कर लेता है, कोई वीलॉग्स अपने अच्छे बना लेता है, कोई इस किस्म की ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स होती हैं आपके पास. लेकिन एक्सप्लोर आपने खुद ही करना होता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, अच्छा ये काम मैं करता हूँ तो मैं विद इन 1 आवर कर लेता हूँ, ये जो काम है ये मैं करता हूँ तो मुझे इसमें 2 to 3 आवर्स लगते हैं. तो जिधर आपका पैशन होता है ना, तो आप वो चीज़ें जल्दी पिक कर लेते हैं, जल्दी आप वो चीज़ें कवर कर लेते हैं. तो यहाँ से फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को लाइक उस फील्ड में अगर आप काम करते हैं, पैशन होता है, तो फिर आप एनहांस कर सकते हैं. जैसे कि हमारी IELTS की क्लास होती है, ही इज़ माई ट्रेनर माशाल्लाह. हमारी IELTS की क्लास में डिफरेंट लोग हैं, कुछ हैं जो आर्टिस्ट हैं, पेंसिल स्केचिंग करते हैं, दे आर सो गुड इन इट माशाल्लाह, कि मतलब सदाकत इज़ वन ऑफ देम. यस सर, बिल्कुल देख के आइडिया ही नहीं होता. और मतलब आज सर उनका एक स्केच दिखा रहे थे, ही पेंटेड जोकर, राइट? या और वो जोकर जो उन्होंने पेंट किया, रियल से ज्यादा अच्छा लग रहा था वो जोकर. एक एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, आर्टिस्ट जो हैं वो ये समझ सकते हैं. बहुत बहुत जबरदस्त. फिर उसके बाद मैं देखती हूँ सर, मतलब लोग कंप्लेन करते हैं, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, और कंप्लेंट्स करते हैं बहुत सारी चीज़ों. जैसे साजिद ने ही बताया कि गिलगित में न्यूज़पेपर पब्लिश एक महीना पहले जब पब्लिश हो जाता है न्यूज़पेपर, तो उन्हें नेक्स्ट मंथ में जाके मिलता है. लेकिन साजिद कोई कंप्लेन नहीं करता उस बारे में कि वो 1 मंथ बाद हमें जाके मिलता है, तो मैं इसको कैसे पढूं. हम लोग कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं सर चीज़ों की कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है. जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करें ना, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं. ऐसे ही लाइक सदाकत हुसैन इज़ फ्रॉम पारा चनार बेसिकली, और ही इज़ फ्रॉम द लाइक रूरल एरिया. वहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, लेकिन ही हैज़ गॉट द पैशन, ही हैज़ गॉट द स्किल. और वहाँ से उसके पास एक पेंसिल होती थी, वो एक पेंसिल से लग रहता था. नाउ ही केम हियर इन रावलपिंडी, तो यहाँ उसको डिफरेंट पेंसिल्स मिल गई हैं, अब वो डिफरेंट पेंसिल से अपना काम कर रहा है. और दिस इज़ द वे ही इज़ लाइक इम्प्रूविंग. तो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप आगे निकल सकते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लोग मिल जाते हैं, आपके फील्ड के लोग मिल जाते हैं, आपके पैशन की तरह, आपके अंडरस्टैंडिंग वाले लोग, वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, तो आप आगे मूव ऑन. So when I talk about my people who are from Gilgit, okay, so they're so very much hard working, because they struggle hard, they strive hard. Wherever they go, they're very much kind and passionate. They're very, I can say, like very much passionate about the things. Okay. So we don't get the opportunities in time, but we try to just avail those things. We try to go, we try to just search out for new opportunities in our life, and God just help us in that. So it's like that, sir. If you will struggle hard, if you have the passion, so God helps you in that. God helps you. Okay. Yeah, exactly. But the good thing about Sajid is how he owns his people, how he owns his city. Yeah. मतलब लोगों को अपने शहर के लोगों को प्रेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम लोग हार्ड वर्किंग हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम गिव अप नहीं कर देते चीज़ों को. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं, दे आर फ्रॉम गिलगित, और इवन इवनिंग क्लास में भी कुछ लोग आते हैं, दे आर फ्रॉम स्कर्दू, गिलगित स्कर्दू, आई थिंक करीब ही हैं. मॉर्निंग में भी, या मॉर्निंग में भी रहे हैं. दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल. एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं. लिटरेसी रेट आप लोगों का आई थिंक 90+ ही है. Yeah, sir. Now the people of Gilgit, they are just flying. We can say like they're just coming on the track. They are just getting awareness regarding the things that how the modern world is going on. So they're just trying just their level best to just be with the modern world. Okay, coming back to the IELTS, आप जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, we welcome you all from FM World Pakistan Islamabad के स्टूडियो से. If you are watching us on YouTube, you are watching us on Facebook, you are more than welcome, and very warm welcome. If you want to call us, if you have any question, you can call us on 05184619113. We are here on FM World Pakistan Islamabad के स्टूडियो से. If you are watching us on app, Play Store की ऐप से आप सुन रहे हैं, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं,
आपके यहाँ कहीं बारिश हो रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा, अपने जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको ख्याल रखिएगा। इफ़ यू आर ऑन द रोड तो आपने अपनी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनका, ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आपके अपने ऊपर अपने मैनर्स पे काम करना होता है, आपको अपने एडिकेट्स के ऊपर काम करना होता है। और वट एवर योर जॉब इज़, वट एवर योर प्रोफेशन इज़, यू नो इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के बगैर तो आप कहीं नहीं जा सकते। एंड दैट्स वाई लाइक The people of our area now they say like English is your passport. English is their passport. Yeah, they say like that. That's very good English is your slogan. passport. That's very good slogan. That's why you are here. Exactly, sir. Exactly. You're right. आजकल मौसम ऐसा है कि like Hobbies. hobbies, the places you visit, travel, tourism, dresses, about wedding, about the clothes, इस किस्म के different topics हो सकते हैं आपके। और द प्रॉब्लम योर होम टाउन इज़ फेसिंग, वो एक टॉपिक उन्होंने 4 टॉपिक्स उन्होंने ले लेने हैं। टोटल 3 to 4 टॉपिक्स होंगे। इफ़ दे आर टेकिंग 4 टॉपिक्स तो आपको 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं। अगर वो 4 टॉपिक सेलेक्ट करते हैं दिल बी आस्किंग यू 3 क्वेश्चन अबाउट अ टॉपिक। एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन उन्होंने करने होते हैं, बट विद इन लाइक जो आपका गिवन टाइम है उस गिवन टाइम के अंदर अंदर ही उन्होंने आपसे क्वेश्चंस करने होते हैं। और उस गिवन टाइम के अंदर अंदर क्या होता है कि एग्जामिनर ने आफ्टर 15 to 20 सेकंड्स उन्होंने क्वेश्चन अगला कर देना है। आपका आंसर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन उन्होंने कर देना है, क्योंकि उन्होंने ना अपनी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना होता है। क्योंकि योर टेस्ट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही वो उसको रिकॉर्डिंग जो बटन है उसको प्ले कर देते हैं और प्ले करते ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। You're listening Radio FM World. You're listening Radio FM World. FM World. You're listening Radio FM World. You can follow us on social media: Facebook, Twitter, Insta, YouTube, and Skype on FM World Pakistan. Call us on 051 846 1913. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम आपको बता रहे थे कि अबाउट आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2 एंड स्पीकिंग पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे थे कि किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस एक एरिया के बारे में पूछे जाते हैं। The people who have just joined us, we welcome you all. We are live from FM World Pakistan Islamabad के studios से. On every Tuesday, on every Thursday, we have brought a special program for you people. IELTS special with Yashal. If you're watching us on YouTube, you're watching us on Facebook. FM World Pakistan Islamabad का हमारा एक official page है on Facebook and on YouTube. आप वहाँ पे हमें join कर सकते हैं. You can also join us on IELTS with Yashal on Facebook page. You can also join us on IELTS with Yashal on YouTube. जहाँ भी आप हमें join करते हैं, आपके जो भी questions हैं, few people will be commenting on Facebook, we'll be commenting on YouTube. We are here to address you. You can also call us.
हमारा राब्ते का नंबर है 0518461913। हम अपनी इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देन आपके पास ना एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चंस रखते हैं. समटाइम दे डिस्कस अबाउट द हॉबीज, समटाइम दे डिस्कस अबाउट योर स्किल्स एंड अबाउट योर जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो अभी हम इसको हॉबीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ हॉबीज़ यू हैव, व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, and how long you have been working on. For example, if a person say that my hobby is sketching, I'm good at sketching, how long you have been working on sketching. इस किस्म के questions जो है ना वो आपसे किए जाते हैं. Okay, starting from Aksa Ijaz. Aksa, if I ask you what are your hobbies, what do you do in your free time when you like don't have any other thing, what do you do? Sir, well, I'm a vlogger. I do my vlogs, I do vlogging, and the niche of my channel is basically travel and festivity. The festivals that happen around the Twin Cities, I do cover them. I do travel, and the time when I travel, I used to make vlogs upon the areas like northern areas. I covered Rawalpindi, Islamabad. तो सर जैसे कि Twin Cities में आता तो मैंने cover किया ही है. But I have been to northern areas like Mari, Swat, Malam Jabba side. So I do vlogging in my free time and I like that very much. Okay, so you have got the YouTube channel. Yes, sir. That is? That is the name from Akijaz. It like spells like AQI space EJAZ. EJAZ. So how long you have been working on YouTube? Sir, it's I guess since 6 months. For the last 6 months, I am on YouTube. You are on Yes. YouTube. Okay. So you are preparing. You are covering the festivals And traveling. traveling. You are covering festivals and traveling. Yes, sir. अगर आप लोग इस चीज़ से थोड़े से like inspire होते हैं about the festivals, you are covering festivals only in Rawalpindi, Islamabad, or you Yes, are sir, moving Twin towards the cities. KPK No. or No, sir, the nowhere Twin else? cities. Only in Twin Cities because you are living here. Yes, sir. All right. As I'm based in Twin Cities, तो सर जब आप बाहर कहीं जाते हैं फेस्टिवल्स को कवर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Yeah. इसलिए मैं जस्ट ट्रैवलिंग को कवर करती हूँ. अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डॉक्यूमेंट कर सकूँ और एक ब्लॉग बना के तो मैं All right. उसको कर सकूँ. All right. Yes, sir. चलते चलते हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने AQI अकीजाज का YouTube चैनल विजिट किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. The promotion thing on FM World Pakistan. Yeah. Okay, moving on towards Sajid Hussain. Sajid Hussain हमारे साथ हैं और माशाल्लाह he's worked on his accent, on his sounds, on his pronunciation. He sounds like the native speakers. Sajid, can you tell me what is your passion? What do you do in your free time? If we talk about your hobbies. For example, sir, for instance, when I get leisure time or spare time, I do a lot of things, sir. I do go out with my friends, talking to them, Okay. talking regarding their problems, Okay. And I do play cricket and football. These are my just. You're a footballer? Yes, You play I'm a football? footballer and cricketer too. Wow. And I do work on my accent. I do work on my English, and plus, sir, I just want to be a model in my life, model. Okay. And I just want to serve my people, sir. I just want to serve Gilgit-Baltistan and Pakistan. So Alright. I just want to work for humanity. First you'll be serving Gilgit-Baltistani people, then you'll be coming in Pakistan. No, I will serve the whole. I just want to serve humanity first. All sir. right. The thing is that serve humanity first. Humanity means like, sir. That's people all who belong about, to, yeah. This is all about. It's like that. So these are my hobbies. All right. Okay. All right. Do you sing? Yes, sir. Do you sing can as well? sing. I can sing. I can sing English songs plus Urdu songs Wow, too. great. Okay. You can sing Urdu? Urdu You can too, speak sir. Urdu as well? Yes, I can speak, sir. Okay, can you tell us something about Gilgit-Baltistan in Urdu? Because your Urdu, it will be very special for our audience and for listeners Sir, and when I viewers. talk about the accent of our people, Gilgit-Baltistan, it's a bit very complex to just understand. Sir, जब हम उनकी बात करें, सर उर्दू की बात करें, तो सर थोड़ा सा हमें मुश्किल फील करते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस फील करते हैं while speaking Urdu. Alright. तो उर्दू हमें अच्छे से आती भी नहीं है और हम बोल भी नहीं सकते. Uttering the words is very complicated. It's difficult. What do you speak in Gilgit? Like, what is your native language? My mother tongue, that is simply Sheena. 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 Okay. Sheena. Like, how do you say like आप कैसे हो in Sheena? Teje Khalhin. Or you can say like to say Samhana.
All right. Somehow. All right. Yes. It's very complicated, right? It sounds like Chinese language. Actually, we are just connected with the You're China at the border of China. Yeah, that's like that. That's right. So you have got like we talk about Saraiki language. ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आती है between सिंध एंड पंजाब. तो जो लोग पंजाब से बिल्कुल एंड पे सिंध के साथ हैं और जो सिंध वाले इस बॉर्डर के साथ हैं, एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड सिंध, तो वहाँ उनकी जो लैंग्वेज है ना, दैट बिकम्स मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज. वहाँ का जो रजिस्टर बनता है, जो डायलेक्ट बनता है, उसको हम सराइकी कहते हैं, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर. सो यू पीपल हैव गॉट द मिक्सचर ऑफ लाइक चाइना एंड. It's not like that. It's not a mixture. But the people who do live near the border of China, they can speak Chinese really well. For example, the people who do belong to Hunza, Alright. okay, they can speak Chinese really well. Hunza comes Ji. under Gilgit, na? Yes, it comes with Gilgit. It's a part of Gilgit, okay? And if we talk about my basic one, I do belong to Gizer, Gilgit Gizer. That's like that. How Okay. you pronounce Gizar? Gizer. That's Gizer. गीजर. Okay. पानी वाला गीजर नहीं. No, it's not Pani Wala Gizer. It's the name of a place. It's a never place. Okay. Okay. Can you sing? कोई आप song सुना सकते हैं? Now we can communicate in Urdu with you as well because you can speak Urdu. Okay, I can speak Urdu, sir. Okay, you can understand Urdu. Okay. Yes, sir. Okay. Can you sing a song for our listeners, for our viewers? Can you sing in English or can you sing in Urdu? Both. I will sing both. You can sing both. Okay, if you want, then I can sing both. Okay. You can sing English first, then you'll be singing Urdu first. Urdu first, then English. Okay, then Urdu first, then It's English. our national language. All right. Please. It's a new song, sir. It's a song of movie Marjawa, Okay. sung by Arjun? no, Jubin Nutiyal, I think so. Alright. So, Tum Hi Aana. It's Alright. like that. All right. Okay. तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें. राह देखे नजर रात भर जाग कर, बस तेरी ही खबर न मिले. बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना. तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना. It's like that, sir. Wow, great. You're good at songs. You've got the good vocals. अच्छी आवाज़ It's है. natural, sir. Yeah, I don't it's practice at all, but it's natural somehow. Okay. What about English songs? English songs, sir, I do listen to Justin Bieber. He's a very well-known singer indeed, you know that. So I do listen to that person. So I can sing a song of Justin Bieber that is like, all the time that you sing my praise, all the clubs that you have entered before. You think you broke my heart, girl, for goodness. You think I'm crying all my always. And I didn't wanna write a song, cause I really didn't wanna be writing. I still care a ton, but maybe you should know that my mama don't likes you, but she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. You have been so caught up in my doubt, didn't see what's going on, you never know. You better sleep with my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. But if you don't, still holding on, do something, you should go and love yourself. It's like that, sir. Wow, that's great. Do you record your songs? Or you make do videos record, or I you do like record, record sir. audios? I do record, sir. Okay. And I'm gonna start vlogging after some time. I just wanna cover my whole Gilgit, so you know that, so it looks like Switzerland. But Yeah, as I it told is you indeed. earlier that we don't have opportunities. Now I'm gonna just vlogging All right. my whole Gilgit. So I just wanna do that. Okay, we are here to help you if you need equipment, if we can guide you and Thank you so much, like sir. how to capture the scenes, all the things we'll be guiding you. Thank you so much. You know, she is a vlogger, she's working on YouTube. I'm also working on YouTube, and we are like FM World Pakistan is also working on YouTube, so we can guide you, we can help you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome.
ओके सो आप हमें देख रहे हैं FM वर्ल्ड पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से. इफ़ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, यू आर वाचिंग अस ऑन फेसबुक, वी वेलकम यू ऑल. जो हमारे लिसनर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमारे पास हैं लिसनर्स. आप यूके से सुन रहे हैं, आप हमें अमेरिका से सुन रहे हैं, कनाडा से सुन रहे हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, UAE से, यू आर इन इंडिया, यू आर इन बांग्लादेश, wherever you are, we welcome you all. And on every Tuesday and on every Thursday, we are here just for you people to address your queries about IELTS listening, reading, writing. आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई क्वेश्चंस हैं, आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं. यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब. इफ़ यू आर वाचिंग अस ऑन FM वर्ल्ड पाकिस्तान, यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक या यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं, यू आर वाचिंग अस ऑन IELTS विद यशाल ऑन फेसबुक और यूट्यूब. आप वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें. हमारा प्रोग्राम कैसा है, हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या क्या चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम आप लोगों के ही कमेंट से आगे चलेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें इसको कैसे मज़ीद बढ़ाना चाहिए, हमें किस एरिया को कवर करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन IELTS स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2, स्पीकिंग पार्ट 3. कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम और विद इन दिस like limited time we are gonna cover it. Do you like hiking, Sajid Hussain? Yes sir, I do like hiking too. Okay, I do go out with my friends. When I was down in Gilgit, so sir, we were 5 friends over there in a hostel. I was living in a hostel too. So we were just going for hiking, and the places that we just discovered when we just when we were out there for hiking, they were really beautiful. Okay sir, but we were not having same like the thing, not opportunities we were having, so we didn't just show that to the world that we, the people who do belong to Gilgit, we have places like this. We have really beautiful places indeed sir, really pretty, but we are not having the opportunity to just cover them. One day we'll be visiting that place. Inshallah, I will take you to Gilgit sir. Inshallah, we'll be visiting. You also do hiking, and yeah, I'm good at hiking. Did you hike here in Islamabad? No, I don't. We do have trials, as you said, that Trail 3, Trail 5, Trail 6. Yes, we have trials, hiking trials. I've heard about that, but I'm not. Here in Margala Hills, there are trials, even for the mountainers, mountain bikers. Yeah. And if you are hill runner, then you can also join there. I used to run with the hill runners. He is like one of our friends. He's in UK now. If we talk about hiking, तो मैं मुनाल में like from Trail 3 parking से top तक within 1 hour I've reached many times. Timer लगा के including break, 5 minutes की हमारी break होती है. अगर मेरे जो hiking partner है, his name is Ansar Bas, he is preparing for CSS these days. इन दिनों हमने थोड़ा सा break लिया हुआ है just because of his preparation. हम नहीं जा पा रहे, लेकिन हम usually जाते हैं on Trail 5. We have reached at the top, जो बिल्कुल top पे एक stone सा आता है. We have been there within 54 minutes without any break. और मुनाल हम पहुंचते हैं from Trail 3 parking से within 1 hour including 5 minute break. वो 1 hour के अंदर ही होती है. Guys, he can go. Don't try this by yourself. क्योंकि माशाल्लाह as he is trained, तो ये जा सकते हैं. हम सर like अगर मैं अपनी बात करूँ तो I can't go even in 2 to 3 hours. ट्राई कर सकते हैं फॉर 1 hour आप जाएं वापस आ जाएं, देन वेरी नेक्स्ट सैटरडे आप चले जाएं, संडे चले जाएं. वीकेंड पे ये एक्टिविटी होनी चाहिए. इफ़ यू आर इस्लामाबादियन, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर, आपको बहुत मज़ा आएगा. हमारे साथ कुछ कमेंट्स हैं, हम इनको शेयर करते हैं. हमारे साथ उस्मान खान साहब हैं, वो कहते हैं गुड, बहुत शुक्रिया उस्मान, इफ़ यू आर वॉचिंग अस या आपने हमें कमेंट किया है, बहुत शुक्रिया आपका. यू लाइक दैट प्रोग्राम. देन वी हैव यासीन शाहबाज, वो कहते हैं हाउ मच प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ IELTS. मैं तो आपको यूँ कहूँगा कि स्पेंड 100 आवर्स ऑन योर IELTS. 20 आवर्स आप स्पीकिंग पे स्पेंड कर लें, 20 आवर्स रीडिंग, 20 आवर्स राइटिंग, 20 आवर्स आप जो भी अगला मॉड्यूल है लिसनिंग है उस पर आप स्पेंड कर लें. इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो बाकी कुछ आप कॉमनली डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप 20 आवर्स में कवर कर सकते हैं. इतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. आई वुड से एटलीस्ट गो फॉर 20 लिसनिंग टेस्ट, 20 रीडिंग टेस्ट, 20 राइटिंग टेस्ट और स्पीकिंग के भी इस तरीके से 20 प्रेफर करना चाहिए. हाँ, मॉक्स प्रेफर करने चाहिए. इस सैटरडे को भी हमारा मॉक हो रहा है. वी हैव बीन कनेक्टिंग IELTS वीकली IELTS मॉक टेस्ट एट CP Lingo, दैट इज लाइक माई इंस्टीट्यूट इन रावलपिंडी, बिल्कुल 6 रोड मेट्रो स्टेशन के साथ ही हम लोग. अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वी हैव बीन कनेक्टिंग 30 मॉक्स अ ईयर. पूरे साल हमारे मॉक्स चलते रहते हैं, आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और इट्स ऑलमोस्ट फ्री. थोड़ा सा
some minimal हमारे चार्जेस हैं फॉर द सेक ऑफ स्टेशनरी, बाकी ऑलमोस्ट फ्री। जब आप मॉक्स को अटेंड करते हैं तो आप ब्रिटिश काउंसिल आइल्स का एटमॉस्फेयर समझ पाते हैं कि कौन से एटमॉस्फेयर में आपका टेस्ट होगा, आपको टाइम मैनेज करने का तरीका आ जाता है मॉक्स अटेंड करने के बाद। आसिफ अली लिखते हैं प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। देन फैसल महमूद गिल ये लिखते हैं यू हैव गॉट अ टैलेंटेड बॉय, ही इज डूइंग लाइक दिस इज फॉर साजिद हुसैन। थैंक यू सर। लाइक पीपल हैव बीन लाइकिंग यू, योर ऑडियो, उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई है, उनको आपकी लाइक एक्सेंट आपको बहुत पसंद आया है। देन फैसल महमूद गिल साहब दोबारा लिखते हैं स्टनिंग वॉइस एवर, लाइक अगेन दिस क्रेडिट गोज टू साजिद हुसैन। थैंक यू सर। यू आर गुड एट वॉइस ओवर्स, यू आर गुड एट योर सिंगिंग, और आपका एक्सेंट और आपकी प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो लिसनर्स आप हमें देख रहे हैं या आप हमें लाइक ऑन यूट्यूब आप हमें देख रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इफ़ यू वांट टू कॉल अस, आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 05184619113। अगर आप मॉक्स के हवाले से हमें रब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 009231745572। इसके ऊपर आप हमें ज़रूर रब्ता करें और आप हमारे मॉक्स ज़रूर अटेंड करें। वी आर कवरिंग लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, समटाइम हमारे स्पीकिंग्स भी होते हैं। फाइनल टेस्ट में जाने से पहले जैसे अक्सर ने आपको बताया है कि एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स आप ज़रूर अटेंड करें, और वो अटेंड करने के बाद आपको अपना रियल बैंड पता चल जाता है। देन गो फॉर रजिस्ट्रेशन। और हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कम टू मी फॉर AU पाकिस्तान IDB के हवाले से। आई एम देयर ऑफिशियल एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर। वी डोंट चार्ज एनीथिंग। जो आपने 34,800 फ़ी पे करनी है वही आप फ़ी हमें पे करेंगे। हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, साथ आपका CNAC या पासपोर्ट की कॉपी होगी, और वो फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचा देते हैं, फ़ी पहुंचा देते हैं, वो यहाँ हमसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस लिहाज से भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इन द मार्केट, इफ़ समवन इज़ चार्जिंग, तो आप ये सहूलत भी लाइक हमारे पास अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और हमारा टाइम बिल्कुल एंड पे है, और जाते जाते हम आपको ज़रूर कहेंगे कि इफ़ यू आर वॉचिंग अस ऑन FM वर्ल्ड पाकिस्तान फेसबुक पेज, हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS। यूट्यूब चैनल भी हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। इफ़ यू आर वॉचिंग अस ऑन IELTS with Yashal on Facebook page, same thing, like don't forget to share with your friends, don't forget to like the button, and if you're watching us on YouTube, press the subscribe button and press the bell icon. That is very important. If you should press the bell icon as well. जो कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स आते जा रहे हैं, आप like we are making videos on listening, reading, writing from FM World Pakistan स्टूडियो से भी वीडियोस आ रही हैं, और हम अपनी जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, लेक्चर्स हैं, वो भी आपको मिलते रहेंगे। और साजिद, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? Sir, again I'm saying thank you so much for just giving me this platform just to speak with the people, to speak to the people. Okay. Sir, I just want to say like I'm missing my Ami and Abu and my brothers, Okay. and my sisters who do live down there in Gilgit, and I do miss a lot my Gilgit, sir. Okay, my okay. friends down there. We have a special wishes a and lot of like special greetings for people them. I do miss. Yeah. Okay. So thank you so much just giving me a chance today. Okay. So, sir, Any message from your side? thank you. The way Sajid owns his people, the way Sajid owns his city, ऐसे ही हम सबको भी अपनी सिटी को ऑन करना चाहिए। आपका कोई भी पैशन है, आप किसी भी चीज़ के लिए क्रेजी हैं, उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें, और किसी भी चीज़ के लिए ये मत कहें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को। ट्राई टू मैनेज थिंग्स। आपने IELTS भी प्रिपेयर करना है तो उसमें भी आपको टाइम मैनेज करना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे, लाइफ वुड बी हेल ईजी फॉर यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, और आप हमें एवरी ट्यूसडे ऑन एवरी थर्सडे हमारा प्रोग्राम जो होता है स्पेशल विद यशाल, दैट इज़ फ्रॉम 12:30 to 1:30, इसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।